Hi, this is Rohit Roy, and you're watching me on FilmiBeat. Keep watching. My 30 years has been, I won't call it a roller coaster that I deserve or that my talent deserves. And this is a fight I keep having with Bappa. Television पे मैं already star था. Yes. Such a big rage कि उसके आसपास भी it was like the Titanic coming towards you. That's why I don't like people talking about struggle. Struggle वो होती है. पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका अगला मील कहाँ से आएगा, उसको स्ट्रगल कहते हैं. और कंपैरिजन टैलेंट की नहीं होती है. कंपैरिजन होती है कि सर आप भी इतने टैलेंटेड हैं, आप अपने भाई की तरह स्टार क्यों नहीं? मुझे जवाब नहीं मालूम है बिकॉज दे हैव नॉट टैप्ड मी नाउ. Hi guys, welcome to फिल्मी बातें with FilmiBeat. This is मुर्तजा इकबाल and today I'm with an actor जिनको मैं कहूँगा कि मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ और अब मैं बुढ़ा लगने लगा हूँ, but ये अभी भी उतने ही young, dashing, handsome दिखते हैं. When I'm talking about none other than Rohit Roy who's here with us today. थैंक यू मुर्तजा, दैट्स सो स्वीट यार. Yeah, I think I didn't want to say this, पर मैं बचपन से actually आपको देखते आ रहा हूँ. ये बात मैं बहुत बार सुन चुका हूँ जब And भी. today I'm seeing you, I'm feeling like आप same ही दिखते हो, कोई difference है नहीं. कोशिश बहुत करता हूँ मैं यार. मेरे को लगता है कि जब तक आप एक एक्टर हैं, आपका ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑडियंस आपको देखते रहे. और दूसरी बात, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ कि जब आप जैसे नौजवान युवा लोग मुझे आके ये कहते हैं कि भाई बचपन में स्कूल में मैं 4-5 साल का था जब आपको देखता था, आप अभी भी वैसे दिखते हैं, तो इसके पीछे एक बहुत एक एंडोर्फिन जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज होता है. एंड दैट एक्चुअली गोड्स मी ऑन टू डू बेटर वर्क, टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? Right. कि अभी सुबह जब मुझे पता था कि दोपहर को आना है यहाँ पे इंटरव्यू करने है, तो उससे पहले जाके जिम खत्म करके आया, सो दैट आई फील गुड, यू नो. एंड यू नो इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन एक्टर यार. मुझे तो लगता है कि हर क्षेत्र में इंसान को अपनी हेल्थ का खुद ही टेक केयर करना पड़ता है, कोई ऊपर से आके करता नहीं है. True. तो बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट बड़ी. मीन्स अ लॉट. Of course, you know, Rohit, 30 years in the industry, 94 में जज्बात आई ओह थी. माय गॉड. नहीं 94 में आई थी. हाँ Yes, 94 में आई exactly थी. 30 years. तो ये 2024 अभी मई जुलाई में I think मई उसका मई release था. 25th को 30 इयर्स हो जाएंगे. करेक्ट, यू आर राइट. Yes, 30 मई, years हाँ in the हाँ. industry. मई How का. do you माय see गॉड. this journey of yours? आई सी इट, इट्स लाइक अ फुल थाली मैन. जैसे हम लोग थाली खाने जाते हैं, उसमें चावल, ये वो, दाल, सब्जी, अचार, पापड़, दही भल्ले, सब कुछ होता है. वैसे माय करियर हैज बीन लाइक दैट यार. आगे पीछे कोई था नहीं. अ, अंदाजा नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ऊपर वाले की नियमत थी कि चीजें होती गई एक के बाद एक के बाद एक. लोग जब स्ट्रगल की बात करते तो मैं बोलता हूँ कि स्ट्रगल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रगल? कि अगर टू गेट गुड वर्क और टू वर्क इन गुड फिल्म्स और टेलीविजन शोज और ओटीटीज दैट स्ट्रगल, देन दैट वो स्ट्रगल तो सबकी होती है. आई एम श्योर कि शाहरुख की भी वो स्ट्रगल रही होगी Right. कहीं ना कहीं. तो मैं इन चीजों को स्ट्रगल नहीं मानता हूँ. मैं बोलता हूँ कि ये तो लाइफ है. आप किसी पथ पे चले हैं तो उस पथ पे रोड़े भी आएंगे, स्पीड बम्प्स भी आएंगे, कभी बहुत लंबी अच्छी अच्छी सड़कें भी आपको मिलेंगी. इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो माय 30 इयर्स हैज बीन, आई वोंट कॉल इट अ रोलर कोस्टर. The only thing I might say is that, you know, I've not got the kind of work that I deserve or that my talent deserves. And this is a fight I keep having with Bappa. And I tell him, why did you give me talent if you're not giving me so many avenues to explore that talent? Right. That's the only thing in one line I would probably sum up. But then, like, the other side of me says, मैंने तो अभी start किया है. So 30 years have gone back in a flash. Actually, if you don't talk about me in the 30 years, this thing, a lot of people, the newer generation, Yeah. who hasn't seen my earlier work, they think I'm, you know, I'm still relevant doing the kind of things I'm doing. तो आई थिंक उसमें भी एक मजा है, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा. तो बोला कि चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट जनरेशन के साथ भी रेलेवेंट होना है. आई वांट टू, यू नो, सो आई हैव ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम प्लेइंग समबडीज फादर और एल्डर ब्रदर. Yeah. आई हैव ऑलवेज शाइड अवे फ्रॉम दैट. आप लगोगे भी नहीं. मैं लगूंगा भी नहीं, मैं कन्विंसिंग नहीं लगूंगा. Convincing कितना नहीं भी अच्छा लगोगे एक्टर बन जाऊं, कन्विंसिंग नहीं लगूंगा. तो मैं बस यही है, 30 साल का निचोड़ के उम्मीद यही रहती है कि अच्छा काम मिले, जिस काम में मजा है वैसा मिले, और जो लोग जब देखें तो आपकी प्रशंसा करें. क्योंकि अगर जो एक्टर बोलता है कि मुझे प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है और मुझे अवार्ड से कोई लेना देना है, बहुत बड़ा झूठ है. आप एक्टर बनते हैं ताकि आपको वाहवाही मिले, ताकि लोग थिएटर में या टेलीविजन पे आपका काम देखें और बोले कि अरे यार क्या काम किया है. मेरा तो ये मानना है कि जब कोई मुझे छोटी सी भी, जैसे आपने तारीफ की, छोटी सी तारीफ करो. गॉड इज इन द स्मॉल थिंग्स. आई एंजॉय इट. You know, as you said, of course, जैसे आप कहते हो कि आपको लगता है कि मे बी आप जो काम आपके जी. टैलेंट के साथ अपने काम डिजर्व नहीं हम्म. किया, but I think television gave you that scope Yeah, to perform television well. did, So yeah. somewhere on the other hand, do you feel कि television पे आपको of course वो scope मिला, and unfortunately Bollywood filmmakers, I think I would हम्म.
blame on the filmmakers that they have failed to tap the talent that you have? They have failed to tap the talent that I have, for sure. You know, I'm not blaming anybody. They have. I mean, there's one Sanjay Gupta who saw talent in me Yeah. very early, and he kept supporting me. He kept backing me, film after film, giving me stellar roles. Otherwise, my entire career, I always, if somebody asks me, my film career is Sanjay Gupta versus nobody. So it's not that I've not done film. I've done films for JP Datta. I've just Yeah. done a film called Forensic. Now, just done a film with a new director. I've done films, but not of that caliber and largesse that a Sanjay Gupta film has. And to make me the main villain opposite of Hrithik Roshan, who's a superstar. I mean, he also needs balls to do that, na? He can cast anybody, yeah. It's a Rakesh Roshan film. Sanjay Gupta is directing it. He can cast anybody. But he puts his faith in me film after film. अभी बोल दिया उसने भैया बहुत हो गया कितना करवाओगे यार so I think the question about not being tapped enough is absolutely valid, that point. And I do feel that there's still so much that I have to give, you know. And I also feel, if I have to take some responsibility, that I wasn't that good earlier. 15 years back, I was not that good. I myself think that, you know, यार ये ठीक से नहीं किया मैंने या काम अच्छा नहीं किया. Because everything I was doing was working. So I never thought about the craft of acting. But I think after Shootout and then the subsequent films and television Yeah. shows and the theater productions I did, that took my craft to the next level. Today, any producer director who comes to me knows that if I'm going to Rohit with any script, any genre, he'll crack it. True. So then that means they haven't tapped me enough. You know, of course, there is Ronit sir also, जी जी your elder brother in the industry. कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको उनके साथ आके किसी कंपेयर कर लिया हो एंड यू वर लाइक ओके अब मैं क्या बोलूं like you know someone must have just हाँ comment only कि he's doing it better you are doing it this way because there was a time when of course he had जी amazing craze राइट Mr. Bajaj को या राइट मिहिर राइट को राइट तो उस टाइम पे कहीं ऐसे होता कि okay I am being compared to the sibling देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिबलिंग्स के साथ कंपैरिजन तो होना ही है हुआ यूं कि टेलीविजन पे मैं ऑलरेडी स्टार था yes स्वाभिमान स्वाभिमान had हाँ already become such a big rage कि उसके आसपास भी it was like the Titanic coming towards you. yeah There was nothing else which was standing. So for 4-5 years, so I had to do nothing. Na? By the time he came into the industry, he had a 7-year gap of absolutely no works. That's why I don't like people talking about struggle. Struggle वो होती है right जब correct आपके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, आपको पता नहीं है कि आपका अगला मील कहाँ से आ गया, उसको स्ट्रगल कहते हैं. लोगों के मतलब सेकंड हैंड गाड़ियां बेचना कुछ सिक्योरिटी का काम शुरू करना ये सारी चीजें ही केप्ट डूइंग दैट स्ट्रगल right यू नो बीइंग शन्ड बाय द इंडस्ट्री सेइंग कि रोनित रॉय इज यूजलेस दैट इज स्ट्रगल हमने क्या स्ट्रगल देखी है यार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं बड़े बड़े घरों में रहते हैं क्या स्ट्रगल है ये स्ट्रगल है तो फिर तो सब ऐसे स्ट्रगल देखे Ronit, by the time he came and then Bajaj became Bajaj, strangely, both are biggest shows. I'm Rishabh Malhotra, he's Rishabh yeah Bajaj. Rishabh Bachchan It's uncanny. Life is written like that. By the time he came, you see, I'd already reigned on television. तो ऐसे ऐसे उस वक्त कोई भी comparison की बात नहीं थी. That time everybody was hunky, everything was hunky dory. People were talking about these two brothers, first family of cinema, of yeah television. television अब लोग compare करते हैं. और कंपैरिजन टैलेंट की नहीं होती है कंपैरिजन होती है कि सर आप भी इतने टैलेंटेड हैं आप अपने भाई की तरह स्टार क्यों नहीं है और वो बिल्कुल करेक्ट कंपैरिजन अब इसका जवाब तो मैं दे नहीं सकता हूँ ना इसका क्या जवाब है क्यों नहीं मुझे जवाब नहीं मालूम है बिकॉज दे हैव नॉट टैप मी सो वी नेवर हैड अ लाइक अ नेगेटिव कंपैरिजन कि ये right इतना अच्छा है ये इतना बुरा है पहले लोग कहते थे कि यू नो यू आर अ स्टार ऑन टीवी लुक एट योर ब्रदर दैट यूज्ड टू पेन मी it's painful for a hmm. younger brother to hear things about his older brother. But also, the one thing which I always say is that Ronit had the kind of confidence that is required by a man in any profession. That today the chips are down, tomorrow they won't be. That's why my line success is not constant, failure is not constant. It's all transient. Today you have one thing, tomorrow you'll see the other thing. Again, day after you'll see the other, yeah first thing. So, लगे रहो. Right. You know, of course, आपने बंगाली फिल्म्स में काम किया है, but now, of course, there's this South thing that people are like, everyone is हाँ. looking for कि South की कोई पिक्चर मिल जाए, बड़ी तेलुगु पिक्चर मिल जाए. Are you looking forward to do a kind of a big South pan India film? भैया मुझे किसी भी लैंग्वेज में फिल्म मिल जाए यार कमाल करते हो कहानी बताई तुम समझे नहीं क्या अब बंगाल में मैंने काफी फिल्में इसलिए क्यों की कि मेरा फर्स्ट Yeah, लैंग्वेज है that's बंगाली language. इज Yeah. माय मदर टंग मैंने जो अभी लास्ट फिल्म की थी उसमें आई गो फ्रॉम 32 to 82
and I completely changed my thing. That film Chengiz did very Changes, well yeah. commercially. और उसमें जो नायक थे हमारे एंटी हीरो कहा जाए, ही इज ह्यूज स्टार जीत. तो बहुत मजा आता है मुझे लैंग्वेज फिल्में करने में. मैंने अभी एक कन्नड़ फिल्म भी की जिसमें एक नए लड़के को लॉन्च किया गया, उसमें भी बहुत मजा आया. लेकिन मैं डायलॉग वो 1 2 3 4 नहीं बोल सकता हूँ. हाँ, मुझे वो डायलॉग पढ़ के उसे समझ के फिर उसे रेंडर करने में मजा आता है. नहीं तो फिर एक्टर का प्रोसेस क्या है. राइट. पहले लोग करते होंगे, मैंने भी कई कहानियां सुनी है, मेरे दोस्तों ने भी बताया कि हम लोग जब तेलुगु तमिल या कन्नड़ या कुछ करते हैं मलयालम, तो उतना वक्त नहीं मिलता है. अ, ऐसा अगर कोई मौका आया जब मेरे पास वक्त ही नहीं है तो शायद आई फॉल बैक ऑन दैट पैतरा और टेक्निक. बट अदरवाइज आई लाइक टू डू लैंग्वेज फिल्म्स. आई received my first international award for a Gujarati film called I Am a Yeah. Guju. You know, I got the best supporting act Dada Saheb Phalke International Film Festival Award, not the ones जो हर कोने नुक्कड़ में हो रहे हैं. तो मौका मिले तो हर लैंग्वेज की, because art has really no language, no boundaries. So I'm open to that. And to answer your question specifically, am I looking to do South? Yes, of course. Who is not? Even the superstars of Bollywood Yeah. want to do South Indian films and South remakes and with South Indian directors because they are the flavor of the season. Correct. And they're doing some really kick-ass work, you know, cutting-edge technology, kick-ass work, larger than life. Of course, being an actor, I want to be part of such films. So lastly, before I wrap up, Ira is of course coming. Then you said you have Control. Any other projects that you are working on right now? यार मेरी किस्मत अच्छी है कि 2 प्रोजेक्ट के बारे में बात कर पाया इस इंटरव्यू में. बेवकूफ. No, I'm so my wife doesn't like it when I dumb myself down. Okay. So seriously, I'm working on a project which is I don't know whether you're aware, but I never really wanted to be an actor. I became an actor by accident. My whole trip in life was to be a writer director, and that's what I'm going to do now. I've written a script. I'm developing a OTT show with Ronit and me in it, which I'm going to be directing, and I'm writing it myself. I've written a film script which I've actually written since last year, and I'm kind of fine tuning it. And now I've started going out to producers because I enjoy direction. I don't really enjoy acting. I don't enjoy. I mean, I won't say I don't enjoy acting, but it doesn't give me the same satisfaction as directing anything. Even if I was directing a TV film or an OTT show or even a TV show, it gives me joy, great joy. So I think I've reached a stage in life where I also need to work for joy, right? Because God's been kind, everything else is sorted, you're protected, you know that even if you don't work for 10 years, you're fine. So I want to now invest because I seriously feel that if on a scale of 1 to 10, I am, say, 7 or 8 as an actor, on a scale of 1 to 10 as a director, I'm 10. And I can say that without any, I'm not trying to be arrogant or make comments which go viral. I know my talent as a director. I know how good I am as a writer. My friends send me their scripts to doctor or to for my. I won't name them, but not my advice. They want me to give my inputs. Right. Uh, Huge stars, they will show me their first cuts. Not because of anything else, because they know that I'm not going to lie to them. Correct. I will tell them what I think. Several friends of mine have showed me their first cut of their films and said कि क्या लगता है चलेगी नहीं चलेगी, and if I don't think it is going to work, I tell them. But you can do that only with very dear close friends. So anyway, to cut the long story short, that's what I'm working on now, and hopefully 2024 will see some directorial of mine on the screen. Great. So Rohit, it was really I'll lovely be the chatting with hottest you. looking, youngest Of looking director, course. Do I need to say that? मैंने पूरे इंटरव्यू में एक ही तो बात की है. So it was lovely chatting with Lovely you. chatting All with the you, best for Murtaza. your projects and thank you so very much for being with Go us. and see Ira, 4th of April 2024. You have a date with me. Thanks, buddy.